Yeah, good evening, everybody. So finally, we have reached to our last section, that is socio-political philosophy. And whatever we have been discussing about do's and don'ts regarding sticking to syllabus, sticking to thinker-based, we have said so much so that कि भाई इसको घर छोड़ के आएंगे, अब इसको वापस लेके आएंगे, इसकी सख्त जरूरत है। और जो हमने शुरू में पट्टा लगा रखा था कि थिंकर बेस्ड ही रहना है, दाएं बाएं बातें नहीं करनी है, क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरेटिव स्टडी, क्या क्रिटिकल एनालिसिस, we are not concerned with that until unless we have read something in some authoritative textbook. We have taken so many examples in paper 1, especially paper 1, and I have told strictly that we will be writing examples, only those which either come on the board or in your synopsis and booklet. इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, they are just for the sake of understanding. So in paper 1 and to some extent in paper 2, philosophy of religion, our approach was strictly focused on syllabus. Boundaries were clearly defined in paper 1. In paper 1, we had seen 100% thinker topics are thinker based. उसमें हमने हमारा दिमाग लगाना ही नहीं था, उन्होंने दिया, उन्होंने आपस में क्रिटिसाइज किया, हमने तो वो लिया और ऐसे कैसे लिख दिया. We applied our all energy in understanding their mindset. यार कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ हमने समझने में दिमाग लगाया, लिखने में दिमाग नहीं लगाया. फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में थोड़ा सा हमारा डोमेन खुला. When we had seen topics like religion and morality, अब इसमें क्या पढ़ना है? We just have to think and we have to write. Religious pluralism, how to have harmony in the mid of religious diversity. सोचो, लिखो. There is not any particular thinker. दलाई लामा ने साहब कहा तो उन्होंने क्या कहा? Understand each other's tradition. More you understand, more harmony you will have, more tolerance you will have. इसमें कौन सी साइंटिफिक और कौन सी टेक्निकल बात बोली? वो तो हम सोच के लिख सकते थे. यार इसको बंद ही कर देंगे. Yes. Okay. So we thought and we had written. Again, some of the topics like mysticism, proof for the existence of God, religious language theory. भाई वहां पर फिर हमारा ओरिएंटेशन वही पेपर 1 जैसा था. भाई इस थिंकर ने ये कहा है, एनालॉजिकल लैंग्वेज ये है, सिंबॉलिक लैंग्वेज ये है, तो यही है, बात खत्म. Now when we come to socio-political philosophy, I mean that needless to say, once you see syllabus, you will understand what I am going to say. Because these topics are very generalized, very common topics. And these are the some topics that are like life and blood, that is like life breath of our system, of human life, of governance, of social, economic, political system. ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, that is the life breath of our constitution. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के लिए है. आप थोड़ा सा डेविएट होते हैं उससे तो देन यू आर अनएथिकल. दैट इज योर टेस्ट ऑफ योर एथिकल सेंसिटिविटी, मॉरल कंपास, कि भाई आपकी लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति है. आई मीन दैट गोज विदाउट सेइंग, यू शुड अंडरस्टैंड दैट. तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यही हम पढ़ते हैं. आप जीएस 1, 2, 3 में जो भी पढ़ रहे हैं उनका अगर हम कोई पूछे आपसे व्हाट इज द टीलोलॉजी ऑफ दैट, क्योंकि अब हमारे पास टर्मिनोलॉजीज, कुछ खास टर्मिनोलॉजीज है, with only we are equipped with that. So if somebody asks you what is the teleological significance of GS paper 1, 2, 3, तो क्या बोलेंगे? ब्रॉडली आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, दिस दैट. मजे के लिए थोड़ी चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन. भाई है किसके लिए, क्यों? वो सारा घूम फिर के इन्हीं वैल्यूज पे आ रहा है.
इन्हीं आइडियल्स पे आ रहा है। तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से कि जो भी हमने पेपर 1 में पट्टा लगा रखा था, अब उसको उखाड़ के फेंक दिया, एंड नाउ यू हैव फ्री डोमेन। नाउ फील फ्री। नाउ क्वेश्चन दैट इज कैन आई राइट दिस, हटाओ यार, सी द कंटेक्स्ट। क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उस क्वेश्चन को आपने एड्रेस करना है, उसको जस्टिफाई करना है। सर उस रिपोर्ट से जस्टिफाई कर दूं? अरे यार करना है यार, जस्टिफिकेशन पूछ रहा है, वो विमेन एम्पावरमेंट पूछ रहा है, वो करप्शन पूछ रहा है, वो सेक्युलरिज्म पूछ रहा है, वो डेमोक्रेसी पूछ रहा है, वो जस्टिस पूछ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि सर ये स्टेटिस्टिक्स की ये जो रिपोर्ट है, या इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, या ये डाटा है, ये लिख दो इसमें। अरे थिंक लॉजिकली यार, व्हाट योर लॉजिक सेज डू दैट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, पूछ क्या रहा है वो लिखो। आपको उस क्वेश्चन को एड्रेस करना है, रेदर देन रिप्रोड्यूसिंग एनी मार्क्ड अप थिंग। व्हाट वी डिड इन पेपर 1, ये जितना भी एक्सरसाइज हमने पेपर 1 में किया, समझने के लिए किया, और वो किस लिए किया, ताकि वो 2 बुकलेट्स जो हैं वो रटा जाए। सिर्फ उसके लिए करा कि यार ये रटवाना है मुझे। आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास कि मेरा ऑब्जेक्टिव एजेंडा इन 2 बुकलेट्स को आपके अंदर डालना है, इसके बाद में आप जो मर्जी आए वो करें। एंड उसको करने के लिए आई मीन वी कांट बी लाइक हैविंग पैरेट लाइक काइंड ऑफ रॉट लर्निंग। इसके लिए हमने समझने की कोशिश करी, कंसेप्ट्स बनाए, प्रजम्पशंस करे, प्रीसपोजिशंस करे। लेकिन पेपर 2 सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ऑल दीज टॉपिक्स यू आर ऑलरेडी स्टडिंग दैट। आप जीएस में यही तो पढ़ते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बताने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी आप पेपर 1, 2, 3 में पढ़ रहे हो, उसके बैकग्राउंड में यही सब कुछ है। तो जब हम कहते हैं कि इसका कोई डोमेन नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, इजंट इट? तो उल्टी बात हो गई कि पेपर 1 में कोई डोमेन नहीं है और पेपर 2 में डोमेन है, लेकिन हम तो काम उल्टा कर रहे हैं। सो डोमेन नहीं है, इसका मतलब ये है, अगेन आई विल रिपीट एंड आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू, और जब मेंस लिखेंगे, जब मिलेंगे बीच में, तो आई वुड बी सेइंग सेम थिंग कि भाई आंसर लिखते वक्त, क्वेश्चन देखते वक्त आपको रिकॉल नहीं करना है क्या क्या चेपना है इसमें, कौन सा थिंकर लगाना है। यार वो 5 पेज रटे थे, ये जस्टिस क्वेश्चन है, वो पांचों लिख दूं? हो सकता है वो क्वेश्चन जस्टिस पे हो ही ना, जस्टिस तो ऐसे ही लिखा हो और किसी पे क्वेश्चन हो। सो यू नीड टू एड्रेस द क्वेश्चन। ओके, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि सर कहना क्या चाह रहे हो, तो भाई कहना मैं ये चाह रहा हूं कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी जो आपके सिलेबस का नाम लिखा हुआ है, आप उसको काट दें। वो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है ही नहीं, तो फिर क्या है? उस सिलेबस का, उस पेपर का नाम है एसे एंड एथिक्स। आप सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में एथिक्स के आंसर लिखने वाले हैं, और एथिक्स के पेपर में ये सोशियो पॉलिटिकल सारा एज इट इज आने वाला है। अगर नहीं आता है, एंड इफ यू आर गुड स्टूडेंट, तो 90-100 के बीच में मार्क्स ले लोगे, एंड इफ यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, तो फिर यू विल बी स्ट्रगलिंग अराउंड 80, 85, 80 के आसपास रहोगे। और अगर ये डाल दिया उसमें, तो आपके 120, 130 इज अचीवेबल, प्लस भी जाओगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। आई शो यू, आई कैन शो यू कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एथिक्स में, आई शो यू वर्ड टू वर्ड, कोई दिक्कत थोड़ी। तो आप अपना प्री सपोजिशन हटा दें। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने के लिए इपॉकी करना जरूरी है। ये जो बायसनेस लेके घूम रहे हो खुद का और मार्केट का, उसको हटाओ। और हमने तो शॉर्ट एसेज लिखने,
और एथिकल आंसर्स लिखने। या मैं तो इतना कहता हूं यार कि आपका एथिक्स का पेपर और ये सोशो पॉलिटिकल पेपर और ऐसे इन तीनों को मिला ही दो, तो वहां तो एक पेपर कम हो जाएगा जीएस का, वहां पर आपके 3 पेपर ही होंगे। ओके, और जो सिलेबस बनेगा उसमें आपका ऐसे, एथिक्स और सोशो पॉलिटिकल ये 3 आने वाले हैं। दैट्स द ट्रुथ। जो समझ गया वो क्रैक कर देगा, जो नहीं समझा वो एक ही सवाल करता रहेगा कि सर करना क्या है। आपका ये सवाल कई लोगों का सवाल रहने वाला है कि सर करना क्या है। मीन यार, अब इसका इससे ज्यादा सरल भाषा में कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। तो बेसिकली सोशियो पॉलिटिकल एसे एंड एथिक्स है ये। अब आपको जस्टिफिकेशन के लिए आपको कंटेम्पररी एग्जाम्पल लिखना है, आपको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिखना है, आपको मिथोलॉजिकल एग्जाम्पल लिखना है, आपको वर्ल्ड लेवल के एग्जाम्पल से लिखना है। लिखें, दैट वी विल सी दैट। Yes, definitely. I'll give you a very solid framework, very good content. Okay, लेकिन क्वेश्चन व्हाट करके तो नहीं आएगा। क्वेश्चन का तो चेंज करेगा कुछ न कुछ, किसी से कोरिलेट करेगा। वो मैन्यूवियर करने के लिए, वो नेविगेट करने के लिए आई एम सेइंग दिस। पेपर 1 में गुंजाइश नहीं है। पेपर 1 में जो हमने किया है वो एज इट इज आएगा। इट वोंट गो बियॉन्ड दैट। अगर जाता है तो फिर कोई नहीं करेगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन सोशियो पॉलिटिकल में सिंस टॉपिक्स आर वेरी जनरलाइज, वो ये तो नहीं पूछेगा ना व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज डेमोक्रेसी। वो क्या पूछेगा? जैसे इसी साल पूछा, इसी साल का ले लेते, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या मतलब इसमें क्या, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, सोचो, लिखो, सी व्हाट यू फील। इसमें क्या कोई टेक्स्ट बुक में लिखा है कोई चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी? पढ़ते तो हो न्यूज़पेपर में, आ तो रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सटल वे। आपको पता नहीं लगा डेमोक्रेसी के चैलेंजेस क्या चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर पे? व्हाई वर्ल्ड ओवर देयर इज ए क्रैकिंग और क्रैक और फॉल्ट लाइंस इन डेमोक्रेसी। अगर नहीं पता लग रहा तो फिर आप न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन था 2024। इन मल्टीकल्चरलिज्म हाउ माइनॉरिटी राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड, ये भी था आगे कल 1-2 साल पहले। ओके, तो चीजें वही हैं, जनरलाइज्ड है, आप पढ़ते हो, यू हैव एनफ कंटेंट फॉर दैट। उसका एक डायरेक्शन हम लेंगे एंड आई मीन मेरी साइड से इट विल बी कंप्लीट। लेकिन 150 प्लस भी लोग गए हैं, 160 प्लस भी गए हैं पेपर 2 में। हम सारा उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और है सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी पेपर 2 का। एवरी ईयर आई कम अक्रॉस विद सर्टेन एग्जांपल्स। इस साल भी मिला। अब ये जो रैंक होल्डर्स हैं, आई मीन they have shared, she has shared, and one of candidate this year rank holder have got 150 plus, and like she was saying, I mean बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसी का एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, हर साल एग्जांपल मिलता है कि भाई टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, और लाइक बस बना बना के लिख दिया, टाइम था नहीं, तो वो बहुत सारी चीजें फैली हुई थी, भाई सोचा कि सोशो पॉलिटिकल को बाद में देखेंगे, बाद में टाइम नहीं मिला, बात तो बाद ही हो गई। तो क्वेश्चन आया, बना बना के लिखा, लिखने के बाद भी डिससेटिस्फाइड हुआ, यार पढ़े तो है नहीं, और मतलब बना बना के सोच सोच के लिख रहे हैं। नंबर आ गए 150 प्लस, एंड 150 प्लस मीन्स इट दिस पेपर प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द सक्सेस इन द रैंक। 150 प्लस तो अपने आप में बहुत अच्छे नंबर है, अबव एवरेज मार्क्स है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पढ़ के नहीं गए, नंबर आए, और अगले साल जब पढ़ के गए तो देन दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव 130। क्यों? क्योंकि पहले साल आपको पेजेस भरने थे। ओके, क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे, क्योंकि कुछ है नहीं ना रिकॉल करने के लिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे,
सोच रहे हैं यार उससे रिलेट कर दें, हाँ यार बात तो सही, उससे रिलेट, आई मीन लॉजिकली, बिकॉज कंटेंट तो वही, सारा सब कुछ वही है, लॉजिकली सोचते गए एंड आंसर लिखते गए। दैट हैज द ओरिजिनलिटी, डाइवर्सिफाइड कंटेंट, डेप्थ, कोरिलेशन, इंटरकनेक्टिविटी, सब कुछ आ गया उसमें, 150 प्लस। अगले साल क्या हुआ कि वो कैंडिडेट जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो पढ़ के गया, रट के गया, और अब क्या है, अब सोच सोच के नहीं, अब तो रिप्रोड्यूस करना है, और वो क्वेश्चन आ गया, लिखो जी जो याद कर रखा है। तो वो डाइवर्सिटी, वो इंटरलिंकेजेस, वो ओरिजिनलिटी, दैट गॉट मिस्ड। तो वहां पर मामला गड़बड़ हो गया। इट इज जस्ट लाइक कि आप ऐसे रट के जा रहे हो और वो ऐसे आ गया और आपने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। दैट्स अ डिजास्टर, आई टेल यू, दैट्स अ डिजास्टर। क्योंकि ऐसे आपका चेक करने वाला एक पैराग्राफ पढ़ते ही, एक पैराग्राफ में नहीं, आधा पैराग्राफ पढ़ते ही विल गेट टू नो रटा हुआ है। And the very purpose of essay get defeated. Essay means an attempt, and he wants to see the mental caliber, flight of thought, the richness of your ideas, thoughts, interconnectivity. वो खत्म ही कर दिया। In the rarest of the rare case के रटे हुए में बहुत अच्छे नंबर आ गए। In the rarest of the rare, otherwise that's a disaster. Okay? तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम तो भाई समझ गए व्हाट सर इज सेइंग। पढ़ के नहीं जाना, मतलब बात ये है। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये भी नहीं है कि हाँ जी हो गया सोशियो पॉलिटिकल, खत्म, नेट करा दिया सोशियो पॉलिटिकल, भाई खेलो अपने अपने हिसाब से, ऐसा भी नहीं। हमारा जो काम है, हमारा जो बेसिक होमवर्क है, वी विल बी डूइंग दैट विद द अटर ऑनेस्टी। अगेन आई विल रिमाइंड यू कि भाई आपको कैसे नेविगेट करना है, मैन्यूवर करना है। आई एम टॉकिंग इन दैट रेफरेंस, 150 प्लस 160 प्लस की बात कर रहे हैं। तो फील फ्री, क्वेश्चन को देखो, रेलेवेंट कंसेप्ट, आइडियाज, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, जो भी आ रहा है रेलेवेंट होना चाहिए, आप लिखो। फिर आपका एक कंसर्न और है कि फिर अगर ऐसा है तो सर जीएस में और सोशियो पॉलिटिकल में क्या डिफरेंस आ गया। अब इनको लॉजिक है इस बात का, मुझे तो कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि सर ये फिलोसॉफिकल कैसे बनाना है। अरे यार क्वेश्चन देख रहा है कि फिलोसॉफिकल बनाने के चक्कर में, राइट, बिल्कुल ठीक है, ओरिएंटेशन होना चाहिए, फिलोसॉफिकल होना चाहिए, क्योंकि हमको जीएस का आंसर थोड़ी लिख रहे हैं। तो जीएस का आंसर तो लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वो जीएस का भी क्वेश्चन नहीं है वो, गेटिंग। जीएस में वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि देयर यू नीड टू राइट सम फैक्ट्स, सम जजमेंट, सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो वैसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप जीएस लिखना चाहोगे वो भी नहीं, आई मीन वो नहीं लिख पाओगे। आई मीन दैट इज लाइक they will, you are supposed to write the core part of that concept. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे अभी हमने बात करी चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या हम बात करें व्हाई फ्रीडम इज नीडेड। कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी नीड टू हैव फ्रीडम, लिखो 200 वर्ड लिखो। आई एम डैम श्योर यू विल एंड अप राइटिंग ब्यूटिफुल राइट अप। दैट्स ए फिलोसफी रेदर देन रिप्रोड्यूसिंग एनी थिंकर्स कि जेएस मिल ने ये कहा, बर्लिन ने ये कहा, मैकफर्सन ने ये कहा, मार्कुस ने ये कहा। गेटिंग, आपने कोर पे हिट कर दिया कि फ्रीडम चाहिए क्यों, तो कोर पे हिट करेंगे। और ऐसे में आप कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हो, लिखते हो? डिड एनीबडी अटेम्प्ट ऐसे? जब कभी भी लिखोगे, अगर अभी नहीं लिखा है तो जब कभी भी लिखोगे, विल यू बी राइटिंग फैक्ट्स? नहीं, तो यहां पर भी मत लिखना, until unless it is very much required। लिख दोगे, काटेगा नहीं, गलत नहीं करेगा, लेकिन लिखना तब ये when it is at most required care and it is organically coming, अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है तो लिखो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन टॉपिक, सेक्युलरिज्म। I will end up devoting, I think, one full class on secularism, and we will not come across any fact, any judgment, any article.
वो रेयरली कोई एक आध आ जाएगा तो आ जाएगा, वो ऑर्गेनिकली आएगा, तब हम मेंशन कर देंगे कि हाँ भाई वो है. अदरवाइज इन फुल क्लास discussion on secularism will have no reference to constitution, judgments or any facts and figures. फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कि जो जजमेंट के अंदर लिखा है, जो आर्टिकल्स में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्यों चाहिए, हम उस कोर पार्ट को डिस्कस करेंगे, विच यू ऑल नो. उसको रिप्रेजेंट अलग ढंग से करेंगे. एंड दैट क्लास वुड बी लाइक ए काइंड ऑफ रेफरेंस क्लास. यार बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के हमने सेकुलरिज्म पे डिस्कशन कर डाला. कुछ वैसे से ही हम काम करेंगे. ओके, टू कंक्लूड विथ, हमने क्वेश्चन को एड्रेस करना है और जो भी हम लिखेंगे उसको जस्टिफाई करें. वो जस्टिफिकेशन कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जस्टिफिकेशन होना चाहिए. एक इस बात पे कंक्लूड करते हैं और दूसरा हम उस बात पे कंक्लूड करेंगे कि भाई ये आपका एसे और एथिक्स का पेपर है. ठीक है. विद दिस बैकग्राउंड नाउ वी विल सी this syllabus, what exactly this syllabus is. Along with one topic, we will try to understand big picture also, क्योंकि बगैर उसके तो काम चलेगा नहीं. बिग पिक्चर फॉर्मेशन है, लेकिन ये पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक के सहारे we will try to understand the feel of this paper and we will have big picture of this paper. Okay. Now, again, topics are, I think only 10 topics are there. Again, short syllabus. Some of the topics are there. I would like to give synopsis. उस टॉपिक में synopsis देना ही है मुझे. Some of the topics I would like to dictate. वो dictate करूँगा. और कुछ एक टॉपिक I won't. कोई synopsis, I won't give synopsis, neither I'll dictate. तो जो सिनॉप्सिस वाला कार्यक्रम था पेपर 1 में वी हैव डन ऑलमोस्ट 100%. फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में भी आई थिंक वी हैव डन 80%, 90%. कुछ एक आध टॉपिक हमने छोड़ा है. सोशो पॉलिटिकल में कुछ टॉपिक ज़्यादा छोड़ेंगे. सिनॉप्सिस हमने सिनॉप्सिस क्या दूँ, सेक्युलरिज्म में, करप्शन में. ओके, सो वी विल कट इट, लेकिन कुछ टॉपिक में आई विल डेफिनेटली गिव एंड आई विल राइट, I'll give I'll dictate the entire write-up on that, especially on liberty, equality and justice, क्योंकि थोड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट से टॉपिक हैं, तो इसमें I'll give you content. ठीक, okay. Now, socio-political philosophy, when we see this syllabus, then we need to decode it, and then we find that this entire socio-political philosophy, your entire ethics paper and your entire socio-economic political system is centered on one topic. That is the ultimate teleology. That is the ultimate end of all man-made system. And that is the teleology of him also, agar wo hai to. That is the supreme value. And उसके आगे पीछे आसपास सारे टॉपिक्स उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. वो अगर आप समझ गए, ऑफ कोर्स समझेंगे. अगर वो उसका फील और उसका पल्स पकड़ लिया तो एथिक्स में बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है. अगेन अगेन आई एम रेफरिंग एथिक्स. वहां पर आप मान के चलो कि 100+ तो आना ही आना है. Okay, and that topic is humanism. This is the one topic written in some corner of the syllabus. Humanism, बड़ा छोटा सा लिखा, कहीं बीच में कहीं लिखा हुआ है. So that is the most important topic. और पूरा आपका सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है. And once we discuss, then what I said कि पूरा सिस्टम इसके आसपास घूम रहा है. So that's like humanism.
So what do you mean by humanism? What do you understand by humanism? Humanity, इंसानियत, humanity. हाँ, humans, ठीक है, that is like values, ठीक है. इसमें पेपर 2 सोशो पॉलिटिकल में तो गलत कोई होने का प्रश्न ही नहीं उठता. गलत कैसे हो जाएंगे? या डेफिनेटली original ideas will always be respected. Okay, do remember that formula. सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ठीक है. सबका साथ सबका विकास का पल्स क्या है? वो यही है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैन एक्टिंग विथ हिज कंसाइंस. ओके, वैल्यूज में हम डाल देते हैं. दैट इज इट्स ऑल अबाउट कंसाइंस. एंड व्हाट योर कंसाइंस इज? That's what is conscience ye nahi kar raha hu. I'm not asking this. I'm asking what your conscience is regarding, of course, this. That is empathy. बिल्कुल ठीक है. That is empathy. अब बताएं what your conscience is regarding. Of course, we are discussing this topic. हाँ, compassion. बिल्कुल ठीक है. That is empathy, compassion, harmony. ओके, ह्यूमन वैल्यूज है. ठीक है, और क्या? We can say both. We can say humanity. We can say shared humanity. What do you understand by shared humanity? नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको. You are right. But I just want to elaborate. I'm just giving you food for thought. What exactly you mean by shared humanity? हाँ, कुछ बता रहे थे. Oh, that's perfectly fine. लेकिन shared humanity मतलब क्या? बिल्कुल ठीक है. शेयर्ड ह्यूमैनिटी, सबका साथ सबका विकास, ये शेयर्ड ह्यूमैनिटी है. कोई फिक्स डेफिनेशन थोड़ी है. ये थोड़ी कि सर वहां उस बुक में लिखा था. लिखा हुआ है यार. हम तो हमारे अपना खुद का एक डेफिनेशन बनाएंगे. ये कोई पेपर 1 थोड़ी है कि एरिस्टोटल ने ये कहा तो हम यही मानेंगे. दैट्स व्हाट द डिफरेंस है. और बताएं व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमैनिज्म इज. मॉरल रीजनिंग. क्यों करते हो मॉरल रीजनिंग? टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड. क्यों जरूरत है आपको डिफरेंशिएट गुड एंड बैड करने की? क्यों चाहिए डिसीजन मेकिंग? क्यों आपको गुड एंड बैड में डिफरेंशिएट करना है? क्यों होना है एथिकल? दैट्स a smart answer. And you have understood कि sir will be satisfied only with this only to achieve humanism. बिल्कुल सही है. To achieve trustworthy in the society, trustworthiness of yours. फिर उससे क्या होगा ट्रस्टवर्दी से? पीस. हाँ बिल्कुल ठीक है. उस लाइन को आप पढ़ो. समथिंग ग्रेट विल कम आउट. कुछ भी. मेरा ध्यान अभी उधर है. इनजस्टिस मत करो. दैट वुड बी इनह्यूमन. राइट, दैट वुड बी इनह्यूमन. क्योंकि थॉट प्रोसेस चल रहा है. भाई ऐसे तो हम भी बोल देंगे आप सब पढ़ के आओ यार, इसमें क्या बात है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, डिस्कस करेंगे और हो गया काम. तो इसका फायदा क्या है फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग का? थोड़ा प्रेशर डालने दो. कोई जल्दबाजी थोड़ी. वी आर नॉट इन हरी.
उम्मीद में मेरा तो पूरा मेरा बिल्कुल पूरा दिल ही बाहर ही गिरने वाला था। मैंने कहा कि यार सारी मेहनत ही बेकार हो गई। अब 3-3 क्लास एक साथ लोगे, isn't it? जब 3-3 क्लास लोगे, जब ओवरबर्डन्ड वर्क के साथ हो जाओगे, तो इनह्यूमैनिटी आएगी, वो एम्पैथी चला जाएगा, isn't it? क्योंकि मैन मशीन बन गया, वो मैन मैन नहीं रहा, वो मशीन बन गया। ओवरबर्डनिंग ऑफ वर्क goes against the ideals of humanism, isn't it? That goes against the ideal of humanism. इसीलिए when police system get overburdened, they end up doing some chaotic thing, some inhuman thing out of frustration. वो रीजनिंग ही गई, ये मॉरल रीजनिंग जिसकी हम बात करें वो ही गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिज्म। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में कंसेप्ट आया, अरे 5 डे वीक करो, अरे छुट्टी दो भाई, घूमने दो इसको। अभी कुछ टाइम से आई थिंक बात चल रहा है 4 डे वीक की, आई थिंक कहीं से देयर वाज डिस्कशन, 4 डे वीक करो, isn't it? क्योंकि दैट इज डिजास्ट्रस फॉर द सोसाइटी। हाँ जी, हम कहाँ थे? इक्विटी, बिल्कुल ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, पीसफुल को एग्जिस्टेंस या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? खुद से काम करो। You have to linguistic intuition. Later Wittgenstein have told us. You have to take out sense out of that proposition. सबका साथ सबका विकास, आप जो कह रहे हो बहुत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फील नहीं है ना इस सेंटेंस में जो आप कह रहे हो, isn't it? फील क्या है? फील ये है कि भाई सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, कोई कमजोर है हम उसको भी साथ लेके चलेंगे, फील तो वो है। So whatever, I mean, some more things and some more terms we can definitely add on into that. That's a post-humanism, बिल्कुल ठीक है। That's a post-humanism, and we are living in an era of transhumanism, where the focus is not just talking about human and human values. The focus is that we need to transform this human being into some Superman, enhancing capabilities beyond the limitation, transcending the limitations of human being. Transhumanism, by taking the help of tech part. It is just as कि चिप लगा दो इसको, इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दो। As you know, I read somewhere कि चाइना में कुछ सोल्जर्स पे, I mean they have been genetically engineered to withstand the -20 degrees centigrade to fight in the coldest areas. मतलब ऐसे ह्यूमन बींग बना दो जिसको सर्दी गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। Transhumanism believes in enhancing the capability of human being, and transhumanism considers that old age and death are they are disease. Just as disease have cure, once upon a time there's a deadly disease were there, and scientists and doctors devoted their lives to find the cure. In the same way, these transhumanists are considering old age and death as disease, and disease have cure. इसका cure करेंगे। There is a further extension.
वो ह्यूमनिज्म भी है, पोस्ट भी है और ट्रांस भी है। तो ओल्ड एज ऐसा कुछ करो कि इसकी एजिंग प्रोसेस रुके। आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, बड़े आर्टिकल्स आते हैं। एंड डेथ इज टू बी ट्रीटेड एज डिजीज, डेथ का क्योर ढूंढेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़े सिस्टम सेल से या वो जो भी कुछ है, डेथ को रोको। दैट्स अ ट्रांसह्यूमनिज्म। लेकिन पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमनिज्म मीन। ये जो भी फिलॉसफी है, वन थिंग इज क्लियर, ह्यूमनिज्म is a philosophy, is a theory, and human, that is a philosophy centered on human. That means it is a human centric philosophy. It is a human centric philosophy. And as a human centric philosophy, it considers that man or human is the essence of reality. It is the essence of reality. We have studied metaphysics, epistemology in paper 1. वहां पर everybody is trying to crack, locate the ultimate reality. Isn't it? That ultimate reality को crack करना है, कौन है, क्या है, idea of good, substance, monos monadum, absolute idea, this and that. Humanism bring all that orientation toward this world. And they say that look, human is the center of the universe. It is the center of the universe. It is the focus of this entire cosmology. Man is the essence of reality, and there is no truth beyond human truth. The only truth is human truth, and there is no truth beyond human being, human truth. Man is the center of the universe. Man is the focus of the universe. It is the essence of reality. And if it is the essence of reality, and if man is the focus of the universe, then let us throw all our energy, time, resources in all-round development of this creature known as human being. And hence, humanism stands for all-round development and welfare of being. If there is no truth beyond human truth, then that's our point of interest. जब यही सच्चाई है, जब यही रियलिटी है, तो लेफ्ट राइट कहां देखना है? Then our entire focus will be on this entity, this creature known as human. And hence, the entire focus from otherworldliness shifted to this worldliness. And in this world, who lives? Human. And if human is that which lives, hence all our focus will be on human. And we want to see human to grow in all the aspects of his life. This human being need to see the fullest development. And hence, humanism is that which seeks to achieve fullness of life. Very important term. Fullness of life. Humanism says that what it says? Right. It says that man is partial, incomplete. So we all are partial. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाऊं क्या? So
We all are partial. We all are incomplete. And we want to become whole. We want to become whole. And hence, we want to see fullness of life. I want to grow in all the aspects of my life. Man is क्या हुआ तो रुक पे गया बड़ा जल्दी. So that's where humanism is. We all are partial. We all want to become complete. And in order to become complete, in order to become fullness of life, you are here. You are aspiring because you have potentiality. You want to grow. And since you want to grow, and since we all, each individual की बात हो रही है यहाँ पर, each individual wants to attain the fullness of life. Hence, I need to have all those adequate opportunities which are required to actualize my full potential. मुझे वो सारी opportunities चाहिए in all the walks of life so that I can utilize my potentiality and I can actualize my potentiality and I can grow, I could grow as a being. That's a humanism. Humanism is simply focusing on certain value. Humanism focuses that each individual carry with himself a sense of dignity and moral worth. Each individual carry with himself a sense of dignity, and come what may, the dignity has to be respected, come what may. In spite of that, despite that, still a being is a human, and being human means carrying a sense of dignity, and that dignity has to be respected, come what may. Hence, humanism focuses on human dignity. It focuses on human moral worth. And humanism is a philosophy that seeks to maximize human values. Its focus is on human interest, human welfare. And hence, humanism wants to see fullness of life in all the walks of life. Each individual is end in himself. Each individual is end in himself. यही end है, यही objective है, हमारा जीवन का उद्देश्य यही being है. और जब यही उद्देश्य है, जब यही target है, so then we will throw all our resources and time on the actualization of potentiality and or fullness of life of this individual. Hence, no one could be treated as means. Each individual is the end in himself. End का मतलब ये individually हमारा objective है. And this individual should grow and should see the fullness of life. Hence, if somebody dies of starvation, what is being compromised? His dignity is compromised. Because he didn't get chance to utilize this opportunity because he was not free from starvation, hunger. ये खाली था. He could not see the fullness of life. वो मौका ही नहीं मिला. तो वो मौका देना है, सबको देना है. Each individual deserves that. We are born with certain inalienable rights. And out of that inalienable rights, like right to life, right to life with
dignity. And right to life with dignity enhance all other rights logically flows from that. वहीं से सारे राइट्स निकल के चलते हुए आ जाएंगे. That's like humanism. Each individual carries with himself intrinsic value, intrinsically valuable. Each individual is intrinsically valuable. Intrinsically valuable means that just like we have 500 rupee note, what is the intrinsic value of this 500 rupee note? Zero तो नहीं है. हाँ हाँ, तो वही पूछ रहे हैं. 500 रुपए का एक नोट की क्या कीमत? इंट्रिंसिक वैल्यू कागज की है. 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा. Isn't it? I think the exact कुछ 2 rupees. 2000 के नोट वाला जो भी जो भी है कागज की कीमत है. इट्स ओनली दैट इट इज लाइक गुड क्वालिटी पेपर. एंड व्हाट इज इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू? worth of 500 rupees. On the other hand, gold coin is intrinsically valuable. It's a precious metal. It's inherently valuable. And of course, it will have extrinsic value also. In that sense, humanism says that individual has intrinsic value. It is inherently valuable. It's inherently precious. Why? Because each individual carrying a sense of dignity and moral worth. And that dignity has to be respected in spite of that or despite that. Even if some hardcore criminal is there who has committed heinous, barbaric, brutal act, so much so that he is stopped to be called as human being. Still, being human means carrying a sense of dignity. Of course, ये सब आएगा. Everything will come. I'll come to that. Everything will come. In spite of the fact that some person has committed brutal, heinous, barbaric act, so brutal that he stopped to be called as human being, yet still, in spite of that, he is human. And human means dignity, moral worth. And hence, we don't put him in a prison, a cell which is full of filth. Is it? No. Is his room is like full of garbage or filth? No. Is he put in such a small cell where he can only lie down or he can sit down? He cannot even stand. No, it is not like that. There is a perfect dimension. Room should be clean. He can sleep and he can sit down and he can walk somehow. वो एक अलग बात है कि एक प्रिजन में कैपेसिटी 10 की है और भरे हुए कितने हैं? 20. एनहेंस उसी के आगे एक लाइन लिखी रहती है. इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. इट गोज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. के आगे कंटिन्यूएशन में वो लाइन लिखी रहती है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. उसके आगे एक और लाइन लिखी रहती है. Those peoples who are like having, those who are like in prisons without trial, their dignity is compromised. Their right has been compromised. Right to hear, right to say, suno to say. There are many hundreds and thousands of people who died there itself without any trial. That is injustice. बिल्कुल ठीक है. There are a lot of cases. हमारे okay.
नहीं, उसके पीछे ह्यूमनिज्म विल नॉट बिलीव. Humanism, though they are not against religion, they are not against a transcendental world, they are not against any supernatural transcendental entity, they are not negating, they are not intended to that. What they want to say, humanism will say that religion is your strictly private affair. Don't mix up with the public. That's your personal affair. One thing. Second thing, humanism will say that, hey, God, even if you are there, please take care of yourself. Don't meddle, don't interfere into our affairs. Why? Because we have been endowed with the power of reason. And we are quite efficient and potential to resolve our problem by reasoning, by scientific temperament, through material means, not through spiritual or religious means. Hence, humanism wants to make a dividing line between religion and personal life or public life. They don't stand for negation. Their objective is not to reject God, reject religion. No. Their entire objective is to focus on the value of human being. So, humanism is a philosophy which focuses on human interest, human values, human welfare, and human dignity and moral worth. Its only one point agenda is that essence of reality is human. There is no supernatural transcendental reality beyond human. Even if it is there, please do take care of yourself. जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, we will not seek your guidance. Hence, solution are not to be sought through spiritual means. Solution will be sought through rational means, reasoning, logical thinking, analytic ability, scientific temperament. That's a humanism. And these scientific temperament, reasoning, logical thinking is the exclusive characteristic feature of human. Reasoning is not found in other creatures. एक एक करके अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं ह्यूमनिज्म में, और ह्यूमनिज्म में टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे तो ह्यूमन डिग्निटी, मॉरल वर्थ, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड इन देमसेल्व्स, रीजनिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, फुलनेस ऑफ लाइफ, अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट टर्म. We all want to see the fullness of life. I want to grow just as a flower blossoms fully. And this flower blossoms when soil is fertile, water is adequate, care is regular, and sunlight is gentle. It's a metaphorical explanation of an individual that we all want to grow. Hence, our environment should be conducive. We need some regular care. We don't want to get overburdened by so much of restrictions. इतने restrictions डाल दो कि freedom ही खत्म हो जाए. And that's where this individual wants to see fullness of life. But that fullness of life can be sought only when this is filled up. अगर ये खाली है तो फिर तो बेकार है. और जब ये भरेगा, then only I will take a second step, and there I will be talking about mental development, spiritual development, moral development. जब ये खाली है तो भाई कौन सा तो मेंटल डेवलपमेंट की बात है, कौन से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात है, और कौन से मॉरल डेवलपमेंट की बात है. That's a hollow. Hence we were talking about that hardcore, brutal who has committed crime. उसको फिफ्थ में नहीं बैठाते हैं, because still he is a human being. Even if he has given death sentence, even if he is given death sentence, he is taken to the gallows with dignity. He is given death not out of cruelty, isn't it? Not out of cruelty. जो लीवर दबाता है और जो
ऑफिशियल्स है, दे डोंट हैव क्रुएलिटी इन देयर आई, इट्स ए passing of an order. Hence, that person is given death sentence with dignity. And the best part is, dignity is maintained even after death by performing last rites according to their religion. That's the humanism. That's the humanism, and it was the perhaps this was the reason when United States made a surgical strike for the Osama bin Laden. He was killed and he was thrown in the ocean. But before throwing into the ocean, last rites were performed according to his religion, as far as the official policy is concerned. Actual में किया या नहीं किया वो एक अलग बात है. But officially they had announced, and they had to announce. They had to announce. अगर announce नहीं किया होता तो there would have been a lot of criticism. Why? Because Western world and United States are the torch bearer of human rights. And human rights are coming from humanism. Humanism एक base है, एक umbrella है, उसमें सारी values इसमें आ जाएंगी. Hence they had to do that. That's like humanism. To ensure dignity. What do you mean by, what do you understand by dignity of an individual? Self-respect, okay? And how you will have self-respect? How you will be able to maintain self-respect? When I am asking question, you please think on that. Huh? Okay, that's a much better. और बताएं, dignity of an individual, what exactly we need to ensure? Not exactly. How to? What exactly it means? Value देना मतलब क्या? Okay. These are means to protect. But I am asking what exactly you mean by dignity. I am not asking how to protect that. Yeah, that's a what Kantian moral law is there. Yes, बिल्कुल ठीक है. But that is not defining dignity. It is written on the board. Human dignity means that one should be able to actualize one's full potential. We all are partial. We all are incomplete. And we want to become complete. We want to become whole. And for that, I need to have adequate opportunities in all the walks of life. When I am getting adequate opportunities in all the walks of life, my dignity is ensured. ये अब मुझ पे है how to utilize those opportunities. कैसे यूटिलाइज करके क्या बनना है ये मेरा डिसीजन है, nobody else. Okay, so that is how human dignity and these values we are talking about. हाँ जी. We will see. We will see. बेसिक कोर को पकड़ के रखें, किसी चीज से कनेक्ट होके बायसनेस से नहीं देखें. आई हैव आंसर्ड यू. कोर को पकड़ के रखें, यू विल गेट आंसर. ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं. एंड वी विल टेक अप दैट. ह्यूमनिज्म कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? हाँ. हाँ, कहीं नहीं लिखा. टीपीएस पे ह्यूमन ट्रीटमेंट है. ह्यूमेन, हाँ ठीक है, ह्यूमेन है.
ह्यूमनिज्म कहाँ लिखा है या डिग्निटी कहाँ लिखा है? प्रेम्बल में लिखा है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कर दिया, प्रेम्बल में लिखा है। और जब ये ह्यूमनिज्म का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए तो आप प्रेम्बल को पढ़ें, और प्रेम्बल को जब पढ़ें तो डिग्निटी को सेंटर में रखें, पेज के सेंटर में रखें, और सारे वैल्यूज को घुमा दें आप। ये जितनी भी अदर वैल्यूज लिखी हैं, जितने भी टर्म्स लिखे हैं, ऑल आर सेंटर्ड एंड दे आर लाइक मीन्स टू एंश्योर डिग्निटी। कुछ भी ले लो, जो मर्जी आइडियल बोल दो। जस्टिस, उसके तो डेफिनेशन ही है इक्वलिटी, लिबर्टी, sovereignty. Of course, nation have to be sovereign. Then only I would be able to protect and promote and ensure your dignity. Democratic, it's the only democracy that can ensure. Fraternity, that's all about सबका साथ सबका विकास. That's allow for humanism. जो मर्जी बोल दो। और ये प्रियम्बल ही नहीं है, ये प्रियम्बल ही नहीं है कि भाई डिग्निटी लिखे, सारे वैल्यूज आर लाइक एंश्योरिंग डिग्निटी। आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन is a means to ensure this dignity, and that makes difference between governance, good governance and ethical governance. गुड गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस में डिफरेंस कहाँ है? वो यहां डिफरेंस आ रहा है। When somebody goes beyond loyalty to organization, organizational integrity, and goes to constitutional morality, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए? डीपीएसपीज है, फंडामेंटल, आप जो मर्जी बोलो यार, जुडिशियल सिस्टम है, जो मर्जी, एनीथिंग यू से, दैट इज डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, दैट्स अ डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये प्रियम्बल को जब आप पढ़ें इस क्लास के बाद में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ते ही हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह वो तो पढ़ ही रहे, उस प्रियम्बल को आप पढ़ें आज विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज। उसको नाम उसका चेंज करें, वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज समझें। वो वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज को अगर आपने समझ लिया तो आप मान के चलें आपका एथिक्स पेपर 4 इज गेटिंग सिंप्लीफाइड टू द हाईएस्ट लेवल। सिलेबस के टॉपिक करने से कुछ नहीं होगा एथिक्स पेपर 4 में। यू नीड टू गेट इट टू द कोर पार्ट, और कोर पार्ट में जाते ही इट विल बी काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, और फिर पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पल्स पकड़नी है। ओके, सो दैट इज लाइक द कोर पार्ट। नाउ ह्यूमनिज्म हैज ethical dimensions or implications. It has metaphysical dimensions and implications. It has epistemological, and it has political, social, economic, psychological. Ethical dimensions, just अभी वही बात कर रहे हैं, because it is focusing on human interest, human welfare, human values, human dignity, moral worth of each individual, wants to see fullness of life. Metaphysical, it believes in naturalistic metaphysics. The reality is all about science, natural laws, physical, chemical, biological laws, all supernatural, transcendental, divinity, otherworldliness are myth and mythologies. Even if they are there, then it seeks to make a divide between otherworldliness and this worldliness. And humanism is focusing on this world, and in this world, who lives? Human. Hence, it is centered on that. So it has metaphysical dimension. It has epistemological dimension. Epistemological dimension because it focuses on reason, scientific temperament, logical reasoning, analytic ability. So that is epistemological aspect. And it is having political, social, economic, psychological implication. This is what we are trying to say, understand,
that this is the what that makes a good governance as ethical governance. And good governance and ethical governance में difference, legal decision and ethical decision. जो इस difference को समझ गया, that will be like understanding ethical governance. Because legal decision might not be ethical, but ethical decision certainly or directly must be legal decision, because you can't become law breaker नहीं बनना आपने. But that's like your sensitivity, that you are coming out of box solution. So it has political, social and economic dimensions also. So humanism is like the most cherished value. It is the supreme value. It is the human-centric value. It's a human-centric philosophy. And that's what we are trying to understand, this humanism, through these terminology. ये वाला क्वेश्चन आपके एथिक्स में था some 4-5 years, that no human being should be treated as means, all are end in themselves. Kantian philosophy से मैच हो रहा है. Is one of the moral laws, treating humanity as an end in itself. Okay. Now, this humanism occupies the dominant position in all walks of our life. Everywhere, humanism, human-centric philosophy has taken the center stage. So much so that social science is referred as humanity, human-centric. And hence, humanism has focus in all the disciplines: political science, sociology, psychology, law, medicine, geography, engineering. Everywhere, humanism has taken a center stage, so much so that social science is better referred as humanism. Okay? Hence, we see different types of humanism, or like different disciplines, like humanist politics, humanist political system. Or you can say, when humanism becomes dominant in political science, then we talk about humanist politics. Because your entire political system is or should center on the human values. They want to create a system where human values could reach to the maximum. That is the maximization of that human value. कुछ इस तरह का environment बनाया जाए जिसमें ये values should see the climax. Hence, in political science, in political system, we experimented with all types of government or system, political system. We tried monarchy, theocracy, aristocracy, oligarchy, totalitarianism, Nazism, fascism, communism, tribalism, और बहुत सारी ism. We tried, we experimented with all. I mean, that's like the historical evolution of human being. वो experiment ही तो करते हुए आ रहे हैं. Ever since man has come on the earth, we tried, we experimented with everything. Ultimately, we have zeroed in. Ultimately, we are asserting without any drop of doubt that democracy is the best form of government. Democracy is the best form of government. That's our result of our experimentation. And there is no doubt about it. Yes, democracy is the best. But the question is, why democracy is the best?
इपॉक ही करके पढ़ेंगे सोशियो पॉलिटिकल को, isn't it? That's how we'll make a difference between what we discussed in the beginning. Rule of the people, इससे क्या, तो उससे क्या, अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हो तो इसका मतलब हो कि भाई तू देख, तू जाने, तेरा काम जाए, थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन चला, यू आर ए स्मार्ट पर्सन। हाँ, और दैट्स फाइन, भारी भरकम नहीं गिराना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें इट इज द ओनली सिस्टम, जो आपने कहा, इट इज द ओनली सिस्टम वेयर ईच इंडिविजुअल वुड गेट अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स। यस, ऑफ कोर्स। वाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? भाई हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम उसी की बात करेंगे ना। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी अलोन, हम कैटेगोरिकली बोल रहे हैं, ऑथोरिटेटिव बोल रहे हैं, that it is the only democracy that can ensure and protect moral worth of an individual, dignity of an individual. No other system can do that. इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हाँ भाई ठीक है, उसी पे आ रहे हैं धीरे धीरे। आप ये, हैव यू अंडरस्टूड दैट नो मैटर हाउ ग्रेट your ruler might be, but if he is not democratic, he cannot ensure moral worth of each individual, no matter, even if your king is Dharmraj Yudhishthir. Welcome. Dharmraj Yudhishthir और अशोका द ग्रेट। क्यों? क्योंकि यार वो राजा है, कुछ भी कर लो, कितना भी हो। अशोका ने तो कहा, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ही हैज ए डिस्प्लेड fatherly love, paternalistic love for his citizens and subjects and people. All men are my children. धर्मराज युधिष्ठिर, भाई ग्रेट, लेकिन अल्टीमेटली राजा है और वो वही होगा जो वो बोलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि यही, सिर्फ यही ये वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंश्योर कर सकता है, और कोई सिस्टम नहीं है। नाइदर टोटलिटेरियनिज्म, नाइदर हिटलर, नॉर कम्युनिज्म, और लाइक एरिस्टोक्रेसी, और लाइक विच एवर इज। दैट्स इट इज बिकॉज ऑफ दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। हाँ जी, बोलिए आप। अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर रही और सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, आई सीरियसली डाउट दैट। वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज शेयर कर रहा है, सोशल नहीं कर रहा है, और सोशल इकोनॉमिक कर रहा है, वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो ऊपर जो बैठा है वो तो अपने, दे विल हैव सेल्फ इंटरेस्ट है। हम्म, हम्म। अब आपके व्यू आ जाएगा। अब आपने जो भी पहले कहा वो सारा जस्टिफिकेशन है। क्यों? मोनार्की में dignity and all these values cannot be ensured because people are not there. People are not sitting in that as a part of governance, rule of the people, by the people, for the people. वो नहीं है, equal representation वो नहीं है। Then राजा will work on his whims and fancies. कितना ही अच्छा राजा हो, हमने तो राजा का किसका रेफरेंस दिया? धर्मराज युधिष्ठिर और अशोका द ग्रेट कह दिया। इससे बड़ा तो कोई बेनेवलेंट राजा हुए ही नहीं, हमने तो उनको भी नकार दिया। आप कौन से राजा की बात कर रहे हैं? They cannot. That's the beauty of democracy. Why democracy? Yeah. Yes. Yes. बिल्कुल ठीक है। There, people are not citizens. People are reduced to subjects, and they are like more like means rather than end. Tell me,
Why democracy is the best form of government? मेरा वही क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना? Yeah? Okay. People are rulers, that is of the people, by the people, ठीक है. Why democracy is the best? Hit at the core. Yes, democracy is based on ideals, that is liberty, equality, justice and fraternity. The major pillars of democracy are this: liberty, equality, justice and fraternity. Hence democracy is the best. My third question, why democracy is the best? ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी दे दिया ना. पीपल आर बॉन्ड विद सर्टेन इनएलियनेबल राइट्स. जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कुछ रिकॉल नहीं करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? डोंट ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू थिंक. अरे बोलने तो दो यार पूरे से. Isn't it? तो थिंक करें, थिंक, यू विल हिट एट द कोर. वो ही फिलॉसफी है. Dig that. क्यों? जैसे अब यू हैव सेड समथिंग एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग कि भाई अल्टीमेटली जाना कहाँ है? सुपरफिशियल चीज नहीं, जो चीज दिख रही है वो नहीं, उसके डेप्थ में क्या है, हम वहां पहुंचना है हमें. तो व्हाई डेमोक्रेसी द बेस्ट? हाँ जी, आप बोलो. यस, वेलफेयर इज देयर, वेलफेयर ऑफ ऑल. ठीक है. यस, democracy, I mean, whatever you are saying, that's perfectly fine. Democracy takes care of all strata of society. The beauty of democracy, why democracy is the best? Because even the humblest being, even the weakest of weak, even the poorest of the poor are ensured democratic ideal. Liberty, equality and fraternity. That's why democracy is the best. They are ensured, each individual is like entitled for those democratic values. That makes it best. My fourth question, why democracy is the best? Yeah, ठीक है, we have discussed that. The first question answer ही वो था. It is the only that ensures dignity, and dignity means availability of opportunities, and that is fullness of life. Okay. 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 I'll pick up this point. Democracy is the best where because there is no discrimination based on caste, religion, gender, etc., etc. Yes, everybody is given a chance to actualize their full potential. Even the humblest being, even the weakest of weak, even the poorest of the poor can reach to the highest position in democracy. That's the beauty. आप और मैं देखते रह जाएंगे, and person who's sitting on the roadside, the poorest of the poor, weakest of the weak, will rise in the hierarchy and will become prime minister and president. And that could be possible only in democracy. That's the beauty of democracy. Isn't it? Road is absolutely clear. There is no speed breaker. There is no hurdle. There is no obstacle. An illiterate person, a poor person, a weak person, and a humblest person can reach to the highest position. Yes, in India, we have seen reaching to the highest position. We have so many examples. Road is absolutely clear. क्या कोई obstacle है? No, because there is a availability of adequate opportunity. It depends upon your skill, how you utilize that, how you optimize that opportunity.
इसीलिए हम कह रहे हैं आप और हम देखते रह गए, और वो जो अनपढ़ आदमी है, he utilized that opportunity and have risen in that hierarchy. That makes democracy as the best. Getting? Why democracy is the best? भाई आंसर्स पे फोकस करें, डिस्कशन पे फोकस करें. ओके, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन सोशियो पॉलिटिकल. आप जो बोल रहे हैं गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, लेकिन कोर पे हिट नहीं कर रहे हो. पहले कोई घुमा के लाया. ओके, ओके, राइट टू डिसेंट. आपका दूसरा जवाब भी सेम ही है, इसमें टीलोलॉजी लगा दी आपने. ओके, रूल गवर्न देमसेल्फ. हाँ ठीक है, एवरीवन इज मास्टर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी. यस, that is like democracy is best because it is based on the philosophy of Gandhian philosophy of Sarvodaya, welfare of all, low and high, strong and weak, rich and poor. Some requires material upliftment, some requires moral upliftment. You must have read one scheme, Antyodaya program, isn't it? What is that? Yes, that is a Gandhian philosophy. अब अंत्योदय अगर आपके जीएस पेपर में आता है तो आप इसके लिखेंगे, इट इज वॉज लॉन्च्ड इन दिस, मेजर फीचर्स आर लाइक दिस, recent changes have been made like this, its impact, pros and cons and way forward. ये आपका जीएस का आंसर हो गया. यहां पर क्या लिखना है? यहां पर कोर पार्ट पे हिट करना है, फिलॉसफी पे हिट करना है. फिलॉसफी पे कैसे हिट करते हैं भाई? वैल्यूज की बात करो. वैल्यू बेस्ड अगर बात करोगे तो वो फिलॉसफी होगी, वो एथिक्स होगी. फैक्चुअल बात कर रहे हो तो वो जीएस होगा. यही ना डिफरेंस है. तो अंत्योदय जीवन की इस कतार में जो अंत में खड़ा है, who is standing in the last in this queue of life, he should get all those basic opportunities which this first person is getting. And who is this first person? Ambani. अब तो अडानी हो गए, अंबानी जी दोनों बराबर खड़े. अंबानी, they are the first. And who is there in the last? Poorest of the poor, weakest of the weak. So he should get all those basic things which this first person is getting. Basic things: food, water, shelter. That is Antyodaya. That's a Gandhian philosophy. That is like Sarvodaya. It can be ensured only in a political system known as democracy. That's why democracy is the best. Correct? Then similarly, humanism will see its impact in sociology, and hence we have humanist sociology. ये जितने भी डिसिप्लिन है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यहां पर दे आर नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट द थ्योरीज, दे आर मोर कंसर्न अबाउट अप्लाइड पार्ट. अप्लाइड फॉर whom? ह्यूमन. थ्योरी पढ़ के दोज वर दे रहा. अब तो ये है कि भाई ह्यूमन को कैसे बेनिफिट कर रहा है. That's why the dominant influence of humanism in this discipline. Hence, more focus is on applied part. Hence, when we see in humanist sociology, then we see the human behavior, the social conditions, the causes of crime. Hence, focus should be on, rather than on punishment, focus should be on removal of those conditions and causes which are responsible for crime.
Focus is not on punishment, focus is on reform, reformatory theory, right? So applied things. Further, we can have humanist psychology. Again, the focus is on applied psychology, application of psychology in all the walks of life. It is not just about the maximum production, a businessman, a corporate house, of course, maximization of profit. वो तो है ही, वो तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. और प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात थोड़ी, दैट्स नॉट अनएथिकल. Isn't it? That's not unethical. पैसा कमाना is not a bad thing. In Indian religion, in scriptures, never poverty was glorified. ये किसने कहा कि poverty has to be, one has to be poor? ये कहीं लिखा ही नहीं. And one of the purusharth is अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अर्थ, पैसा कमाना है भाई, दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो बुरा नहीं है, खूब कमाओ, बट द मीन शुड बी एथिकल. धर्म, क्योंकि पैसा कमाओगे तभी ना सर्विस होगी. अगर पैसा ही नहीं है तो कौन से एल्ट्रुइज्म करोगे और कौन सी चैरिटी करोगे और कौन सा हेल्प करोगे. हेंस मनी इज नेसेसरी. हाँ ठीक है, पहले भी कमा लो तो कोई बुरी बात नहीं. तो पॉइंट ये है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू धर्म. हेंस अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड पार्ट ऑफ ह्यूमनिज्म. अब आप देखें एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमनिज्म इन लॉ. कैन वी कोरिलेट? यस, एप्लीकेशन ऑफ humanism in law. Hence we have the issue of bail or jail. Hence primacy of bail. क्यों भाई? But that should be something, should be last resort. Hence issue, there is a debatable issue regarding capital punishment. Many countries have abolished. Some countries are continuing. In India, we have capital punishment. लेकिन जब कभी भी किसी भी कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, यू सी आर्टिकल्स, देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स, डिस्कशन फॉर एंड अगेंस्ट. या सम, आई मीन डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर अगेंस्ट में चले. दैट्स अ डिबेटेबल इशू. दैट्स अ वर्ल्ड ओवर. In India, we have, because India is continuing with the capital punishment. So there was a time when capital punishment was not given, then it was asked that why it has not been given. और अब हम जिस टाइम में रह रहे हैं उसमें है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट दे दिया तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई यू हैव गिवन. आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म, moral worth. You have no right to take anybody's life because you don't have power to give anybody's life. जब किसी को दे नहीं सकते हो तो किसी की ले नहीं सकते. Yes, even within capital punishment there is a debate regarding the mode of capital punishment, and whichever mode you adopt, that should be least painful, because objective is not to give pain, objective is to give death sentence. Cruelty nahi hai, so least painful diya jayega. And hence we have different mode. Lethal injection is there, gas chamber is there, hanging is there, shooting is there. India is continuing with hanging because it is considered as least painful and easiest. zyada dimag nahi lagana hota. We have one topic, capital punishment for and against. We will see that. डिग्री ऑफ टॉर्चर अगर है, अगर एक्सपोज होता है तो क्या आर्टिकल पढ़ते हो आप उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल ले रहे हैं, आ रहे हैं.
तो टॉर्चर जो होता है, थर्ड डिग्री टॉर्चर है, तो उसके आगे एक लाइन भी तो लिखी रहती है, इट्स इनह्यूमन। तो सबसे ज्यादा कौन क्रिटिसाइज करता है? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इजंट इट? वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कहीं पे वो कौन सी थी यूएस की, ग्वांटानामो बे, वहां पर देर इज लॉट ऑफ एट्रोसिटीज, दे वर ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स, व्हेन इट वाज एक्सपोज्ड देन सी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वाज देयर। वो है ना क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में तो डिफरेंस है ही ना। दीज आर द मैटर ऑफ कंसर्न। यूथेनेसिया, right to life with dignity, hence there should be right to life, right to death with dignity, and Supreme Court has taken a very significant step in that direction, isn't it? That's a very significant, a very matured step. There was a time when हम डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, फिर डिस्कशन होना शुरू हुआ, and then we have judgment कि भाई passive euthanasia is good, is allowed. हर जगह आपको ह्यूमनिज्म का इन्फ्लुएंस दिखेगा। एनवायरमेंटलिज्म, यस इट इज देयर। एनवायरमेंटलिज्म का मतलब ही वो है। एथिक्स में इट वाज आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटलिज्म? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज symbiotic relationship between man and nature. We have interdependence. It's not men dominated system, it's not nature dominated also, it's a symbiotic. तो एनवायरमेंट में इन्फ्लुएंस है। इकोलॉजिकल ह्यूमनिज्म, ए न्यू टाइप ऑफ ह्यूमनिज्म इज लाइक इकोलॉजिकल ह्यूमनिज्म। मेडिसिन में है, मेडिकल प्रोफेशन, लॉ, एवरी एरिया यू विल फाइंड, हर जगह है भाई, एवरीवेयर वी हैव इन एजुकेशन, isn't it? The influence of humanism in education in a very subtle way. बड़ी चीजें तो बहुत है, and its impact of humanism can be seen clearly in education. How? Can you give me some examples? Very subtle, very small things. Yeah? Okay, your syllabus has ethics. Punishment, schools में, isn't it? पहले क्या होता था हमारे टाइम में? बड़े डंडे पड़ते थे। अब सोच के लगता है यार वो डंडे खा कैसे सकते, मतलब यार इतनी मतलब कैपेसिटी थी क्या कि इतने भयंकर डंडे खा लेते थे? खाए किसी ने? So that's like punishment. आज you cannot afford to give punishment to any kids. That is considered as inhuman, isn't it? Those punishment होता था ना हमारे टाइम में, तो भाई खड़ा हो जाए डेस्क पे, तो हम लोग तो खड़े होते थे, वो देखता तो शैतान बच्चा होता, वो कहता था यार व्यू सही दिख रहा है भाई यहाँ से, isn't it? आज आप बोल दो किसी को, नो टीचर कैन डेयर, और बाई चांस अगर खड़ा कर दिया तो देन तो भाई वो अगर रोता हुआ घर चला गया वो बच्चा, तो उस टीचर की नौकरी गई 100%। यू कांट टच, यू कांट स्लैप। हमारे टाइम में एक कैरेक्टर होता था स्कूल में, पीटीआई, डेंजरस कैरेक्टर था भाई, दैट वाज टाइगर, बट नाउ द टाइगर हैज बिकम लैम्ब। आवाज ही नहीं निकलती उसकी, वो रुतबा खत्म हो गया। और क्या है, इस जो बैक का जो वेटेज है वो कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च स्पाइनल बैंड हो गई, इतना भारी भरकम बैग लेके जाते हो, isn't it? Every year court has to interfere during the admission process, खासकर बड़ी सिटीज में, खासकर दिल्ली में। देयर इज अ व्यू कि यार तुमको जो कुछ भी कराना है, पढ़ाना वढ़ाना, होमवर्क कराना है, स्कूल में करा दो, ये घर पे नहीं काम करेगा, isn't it? घर पे कोई होमवर्क का चक्कर खत्म, घर पे ये खेलने आएगा, खाने पीने आएगा, सोने आएगा, तो जो कुछ कराना है तुम करा लो यार। यस,
दैट वाज टॉर्चर। विद इन 3 किलोमीटर से भी एडमिशन लो, उसके पॉइंट्स होते हैं। क्यों? बिगर द सिटी, बिगर इज द क्रेज फॉर प्रेस्टिजियस स्कूल्स। कहां कराना है एडमिशन? डीपीएस में। किसी ने पूछा बच्चा कहां पढ़ता है जी? डीपीएस में। अच्छा, डीपीएस, उसका स्टेटस एनहेंस्ड, डीपीएस में पढ़ता है, ग्रेट। डीपीएस दिल्ली में। डीपीएस कहां? रोहिणी में। अरे रोहिणी में वो स्टेटस जो बड़ा वो धड़ाम से नीचे आके गया, क्योंकि डीपीएस में भी हायरार्की है, दैट इज आरकेपुरम। आरकेपुरम में पढ़ेगा तो ही आपका सोशल स्टेटस होगा भैया, नहीं तो फिर मस्त रहो। ओपन बुक टेस्ट भी है, इजंट इट? और डीपीएस आरकेपुरम में एडमिशन ऐसे आसानी से नहीं हो जाता। दे हैव मोर टफर कंपटीशन देन यू। यस, लिटरली एनीबडी हु इज फ्रॉम दिल्ली दे मस्ट बी नोइंग दैट। 4 साल में जो एडमिशन होता है उसकी कोचिंग 2-2.5 साल से का होता है, तब शुरू हो जाती है। 1-1.5 साल की कोचिंग करनी पड़ती है। पहले लेते थे, पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते थे, बच्चे का इंटरव्यू लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि भैया कोई इंटरव्यू नहीं लेगा। देयर वर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन एंड द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन भी चेंज हो गया। अदरवाइज पहले तो बड़ी टॉर्चरस ट्यूशन होती थी, 1 साल 1.5 साल के लिए कोचिंग चलती थी। पता लगा कि भाई आर के पुरम स्पेशलिस्ट टीचर है, एक्सपर्ट इन टू दैट, वो उसकी कोचिंग, उसकी ट्यूशन क्लासेस 25-30 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 1 घंटा पढ़ना। कौन सी, कहाँ ये? हाँ, नो, दैट्स फाइन, दैट्स ऐड तो दे ही सकते हैं यार। यस, बिल्कुल ठीक है, कोई फेल नहीं होगा 8वीं क्लास तक। पता लगा कोई पहले चौथी 5वीं क्लास में फेल हो गया, बोले तो चौथी में ही फेल हो गया, तो उसको लगता था कि मैं फेल ही हो गया लाइफ में। ग्रेडिंग सिस्टम, इजंट इट? पहले परसेंटेज आते थे, इजंट इट? परसेंटेज आते थे, पता लगा 97.2% आए, फ्रेंड के 98.2% आ गए, 97.4 वाले को डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ सुसाइड। 60 वाले को कोई दिक्कत नहीं होती थी। Anything which get overburdened and the purpose of that get defeated, that is like against humanism. Huh? Recently there are a lot of suicide cases in Kota. हाँ, लॉजिस्टिक ऑफ एजुकेशन ले लो, कुछ ही ले लो, जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट। भाई वो तो यहाँ पर ठीक है, ये लॉ तो बड़े ढूंढ के लेके आओ। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही गहरा असर हो गया। Okay. So basically, what we are trying to understand the impact, influence of humanism in different walks of life, its implication. Okay. Now, it is like birth of humanism. Since when we can trace its development, its origin of humanism. So, we can trace to the Socratic statement when he says, unexamined life is not worth living.
right? He was tried, he was given death sentence, and while drinking that bowl of hemlock, he says, unexamined life is not worth living. That means, with this statement, he focuses on that is spatial characteristic of human being, and that is reason. That if you don't allow me to use my reason, then it is better to die than to lead animals alive, because animals don't use their reason. So usually it is humanism, it is considered that this statement becomes the birth or the beginning of humanism, and there we see development, the growth of humanism. We see different types of humanism, like अब ह्यूमनिज्म जिस किसी भी फील्ड में जाएगा, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट. तो अगर ह्यूमनिज्म एनवायरमेंट में जा रहा है, क्या बन जाएगा? इकोलॉजिकल ह्यूमनिज्म. अगर वो जेंडर राइट्स की बात कर रहे हैं, अगर जेंडर में चला गया तो क्या बन जाएगा? फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट ह्यूमनिज्म. इजंट इट? कास्ट सिस्टम में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? Humanism in caste social system, isn't it? So we can find out different types of humanism. Such types of humanism are like Renaissance humanism, 13th-14th century AD Europe. And Renaissance, when it had occurred, then we found that Renaissance of Europe was based on two pillars. These two pillars were humanism and reason, scientific temperament. Renaissance means rebirth. Rebirth of what? Renaissance means rebirth. Rebirth of what? Critical thinking, which was once upon a time present in Greek time. And during medieval times, that vanished, that was absent. And when it came back, when there was a rebirth of that critical thinking, that marks the beginning of modernism. And that is like Renaissance humanism. And once Renaissance had occurred, then Europe had fallen in love with human. Their new love was human. And now, in different things, we find human-centric, the human-centric aspect. Everything is to be represented through human value. That was a new love. तो कोई पेंटिंग बनाएगा उसमें ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन would be the center, point. Hence, one of the most discussed and debated painting is Mona Lisa. It is like debated कि भाई men है, women है, pain है, happiness है, sarcasm है, क्या है? There is a different interpretation of that painting. Through that different interpretation, actually, it is like knowing the different dimensions of human personality. So human took the center stage. अब आप पेंटिंग कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, आर्ट बना रहे हो, हर जगह ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर. इस पीरियड में ह्यूमन स्टैच्यूज जो बनी और रेनेसेंस से पहले ह्यूमन स्टैच्यूज बनी, उसमें डिफरेंस है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. वो क्या डिफरेंस है? ह्यूमन की स्टैच्यूज में डिफरेंस आ गया. वो इसलिए कि रेनेसेंस में मोर फोकस वाज पुट ऑन representing human emotions, depiction of intricate features of human, veins, arteries, muscles, biceps, triceps. जितना ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं उतना रियलिस्टिक बना. पहले ऐसा नहीं था. तो हर जगह ह्यूमन बीइंग ने सेंटर स्टेज पे ले लिया. इवन रिलीजन, रिलीजियस वैल्यूज और रिलीजियस थीम्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू ह्यूमन वैल्यू.
Mother Mary and child Jesus. That's a human value based. Similarly, we have different types of humanism like socialism, humanism. We can also talk of Marxism, humanism. We will see when we will see socialism and Marxism, then you will understand that in what way they are humanist. Then we have radical humanism or given by or new humanism given by M. and Roy. M. and Roy. M. and Roy, that was revolutionary, and communists belong to the first generation of communism. Is the same person whom you studied in 1920s. But 1940s, he was disillusioned and he left communism and all that. And he became humanist. He coined a new term, new humanism or radical humanism, where he focused on freedom of an individual, creative faculties of human being. He says ignorance is the biggest hurdle for the freedom. And that ignorance will be removed by only by scientific development. Hence, he focused on rationality, morality, and humanism. Anything which curtails human freedom, he discarded. Hence, he discarded spiritualism, nationalism, communism, socialism, Marxism, and advocated materialism. Focus on reason, scientific thinking, critical thinking. Nature of man is not to believe. Nature of man is to question, is to inquire, is to be curious. Hence, he upholds the sovereignty of an individual. Revolution is not just all about economic revolution. Revolution should go beyond economics. It should be total revolution, and that is like in thoughts, critical faculty should be developed. Okay? Then we can talk about ecological humanism. We can talk about feminist humanism. Okay? Can there be religious humanism? Can we have religious humanism or can we have Christian humanism? Can we have? No? तो religious humanism हो सकता है? अच्छा, रिलीजन में भी ऐसे ही होता है. You have to follow certain code of conduct. You have to submit yourself to the Almighty, omnipotent God. You have to submit your freedom. You have to subordinate to that Almighty. So can we have religious humanism or Christian humanism? How? सब कास्ट है तब तो अगेंस्ट ह्यूमनिज्म चला जाएगा. The question is, can there be religious or Christian or Buddhism or Hinduism, humanism? Freedom is compromised. बिल्कुल आप ठीक कह रहे. That's a one aspect. But the same Christianity which you are talking about and criticizing, same Christianity talks about love thy neighbor, compassion. Jesus sacrificed his life for the cause of people, humanity. Christianity means love, compassion. Islam means brotherhood. We have so many mystics we have discussed. Complete mysticism.
Contemplation gives rise to boundless action, creation, love. There is a plea to uplift downtrodden. Ramakrishna Paramahansa says, service to man is service to God. Is religious humanism not possible? It is. Is Christian humanism not possible? Yes, it is. तो फिर क्या? When religion and Christianity interpreted in narrow terms, then Christian humanism, religious humanism is contradiction. Because humanism is talking about freedom, creative thinking, autonomy, and religion is all about God and his system. When, however, religion is interpreted in broader terms, when religion is talking about values, then religious humanism is possible. Then Christian humanism is possible. And we have lot many examples. Mystics हैं, Christian mystics हैं, Sufi saints हैं, Islamic mystics हैं, Hinduism mystics हैं, they are talking about the service to the society. It depends how you interpret. Once there was question. In narrow interpretation, it is a contradiction. In broad interpretation, it is very much possible. Is that fine? That's like humanism. The heart and soul of socio-political philosophy, the heart and soul of ethics paper, heart and soul of constitution. आप अंदाजा लगा सकते हैं, it is so important. And if I ask you one question, that which article from the constitution have seen the most liberal interpretation? Article 21. Can you please tell me how many rights have been included in Article 21? Many तो जवाब थोड़ी हुआ यार. अभी तक कितने आ गए वो हम तो वो पूछ रहे हैं. स्कोप ये थोड़ी है, एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी है. दैट्स ए वेरी फैक्चुअल थिंग. हमने ये नहीं पूछा और कितने आएंगे. हाँ 70. तो इतने तो नहीं होंगे. 20s में है. आई थिंक इट इज अराउंड 27 और 28. जस्ट गेट इट कंफर्म. आर्टिकल 21 क्या है? हाँ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. हाँ, राइट टू. यस यस. राइट टू मैरिज जरूर ध्यान रखें आप. हाँ, ये भी कोई राइट है क्या, राइट टू मैरिज? हाँ, yes. So when it was interpreted that this Article 21 is not just right to life, it is not just right to life. Rather, Supreme Court had interpreted it, it is a right to life with dignity. In bracket, that's invisible, but that is like right to life with dignity. Once it was interpreted in that way, we see the most liberal interpretation of that. And more than 25 rights have been come out of that, which are known as inferred rights. Right to clean environment, right to sleep, right to privacy. Okay, all many rights are there. तो जितने भी वो आर्टिकल्स हैं, जितने भी फ्रीडम राइट्स मिले हैं, आर्टिकल 21 को पढ़ें और वो सारे राइट्स जो इन्फर्ड राइट्स हैं उनको पढ़ें, सोचें, think on that. And don't get surprised that some of the question in your GS will get answered. And some of the question will get automatically answered in ethics paper. हर एक पे जो भी राइट लिखा हुआ है, हर एक पे ब्रेनस्टॉर्म करें एंड कोशिश करें उस पे 5-5, 6-6 पॉइंट इकट्ठा करें. See the dimensions of that. That is how you have to need to make an inventory. So that is the what is humanism, what is the significance of humanism, what is the implication of humanism. Now, if we keep humanism in the mid of page or in the middle, अब बाकी सारे सिलेबस देख लो. अब आपके जो भी सिलेबस में मेंशन है उसको ले लेते हैं एक एक करके.
Is liberty, equality, justice related to humanism? Rights and duties, individual and state, sovereignty, though it's a thinker based, but still, state can protect your dignity only when it is sovereign. Then you have topics like democracy, we have discussed that, isn't it? Then you have topic like gender issues, gender discrimination. Is it related? Yeah. Yes. Caste discrimination. Yes. Development and progress. Yes. अब बोलो कौन सा टॉपिक है? ये आपका पूरा सिलेबस है. दैट्स लाइक बिग पिक्चर फॉर्मेशन. अगर आपको कभी लगे यार ये आंसर फिलोसॉफिकल नहीं हो रहा तो ह्यूमनिज्म डाल दो, फिलोसॉफिकल हो जाएगा. करप्शन, इज इट रिलेटेड? यस, because corruption leads to, isn't it, compromise on somebody's dignity or opportunity. Genocide, yes, genocide is inhuman. Capital punishment, yes. Socialism, Marxism, yes, हमने तो लिखा ही, that's a type of humanism, socialism, Marxism. तो सारे टॉपिक्स हैं. अब इस बैकग्राउंड में, इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस ह्यूमनिज्म, फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, वी विल पिक अप ऑल दिस टॉपिक्स वन बाय वन. लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव ह्यूमनिज्म का रहे. एवरी टाइम वी वोंट बी डिस्कसिंग, वी वोंट बी रेफरिंग टू द ह्यूमनिज्म, बट ह्यूमनिज्म शुड गेट इम्बाइब्ड. ये उतर जाना चाहिए, एंड विदाउट रेफरिंग एंड विदाउट अगेन डिस्कसिंग, all topics have to be seen from the perspective of humanism. Humanism matlab human values, human interest, human welfare, human dignity, human moral worth, and in themselves fullness of life, intrinsic value. That's like all humanism. Is that fine? Chaliye, so then let us wind up for the day. We'll continue tomorrow. Okay. Thank you. वो था ना यार, हमने डिस्कस किया था फिलोसफी ऑफ रिलीजन में. ओ माय गॉड, आई थिंक यू देखे हो, यू विल एंजॉय.